Excuse me, Doctor. There's an emergency and they're waiting for you in the theatre. Okay, I'll be there in a minute. So, this is the end of our university life. The golden life. Tell me, Sophie, are you feeling sad? Sad? Why should I be sad? I have a beautiful life ahead of me with you, Samir. I promise you. I think maybe you should meet my parents. That's great. When? Tomorrow night, maybe for dinner, you think? Yeah, that's great. Tell me something about your parents. My parents? What can I tell you about my parents? They're the sweetest, kindest people in the whole wide world. You know what I'm going to do? I'm going to sit in front of your father and I'm going to ask for your hand. You're gonna kneel down in front of my father? That's not the way to ask his permission, Samir. Maybe you can ask my permission like that, not my father. Okay. So, Sophie, will you accept me? Do you have another choice? If not, then I guess I will. वालेकुम सलाम। आज बहुत देर हो गई जी। Today is Thursday. Three operations every Thursday. आज एक स्पेशल ऑपरेशन करना पड़ गया इमरजेंसी में। एक एक्सीडेंट का केस था। It's a hopeless case. लड़की प्रेग्नेंट थी। चोटें भी उसको काफी लगी थी। खून भी ज़ाया हो गया था वहाँ से। So we had to operate on her as well. Raining. खासा बड़ा ऑपरेशन था। पूरे 3 घंटे तक हम 3 डॉक्टर ऐसा लगता था जैसे मौत से लड़ रहे हैं। मुश्किल ये थी कि अगर पहले बच्चे को बचाते हैं तो माँ चली जाती है और अगर माँ को पहले बचाते हैं तो बच्ची चली जाएगी। अजीब कश्मकश थी। फिर किसको बचाया? ऐसी सूरत हाल में एक अजीब सी बात होती है हमेशा। आखिर में पता चलता है कि बचाने वाली ताकत तो कोई और ही है। उसने दोनों को बचा लिया, माँ को भी, बच्चे को भी। बच्चा कैसा है? लड़की है। She's fine. She's just fine. It's a 9-pound baby girl. अलबत्ता माँ को ठीक होने में कई महीने लग जाएंगे। बच्चे को कौन संभालेगा? For God's sake. उसका हस्बैंड है, उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, उसके रिश्तेदार हैं। They'll look after her. Okay. चलिए आप कपड़े बदले, मैं खाना लगाती हूँ। Good.
I'm really happy. I'm so happy. Well, I can see that. Tell me all about it. Guess what? I'm engaged. How wonderful. Who's the lucky man? He's tall, dark, and handsome. Prince Charming. Yes, and much more. He wants to come over for dinner tomorrow night to meet you and Daddy. And he wants to ask Daddy's permission to marry me officially. Come and talk to Daddy. He'll be so thrilled. आप डॉक्टर के पास गई थी? आप ही ने तो कहा था कि गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम लूंगा। Oh, I'm sorry, I forgot. Okay. मैंने सुना है ये डॉक्टर सलवन बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं। Oh, he's the best. खुदा करे वो हमारे लिए भी इतने अच्छे साबित हो। वैसे आमना मेरी समझ में नहीं आता आपके लिए इतनी परेशानी की क्या बात है भाई? आपकी रिपोर्ट्स वगैरह तो सारी ठीक ठाक हैं। 5 साल बहुत होते हैं, इसलिए परेशान होती हैं। आमना मैं सोच रहा था कि डू यू माइंड, मेरा मतलब है कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। क्या? आपकी तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आप उसे पालेंगी, पोसेंगी, उसका ख्याल रखेंगी, मसरूफ़ हो जाएंगी। जी नहीं, मैं अपने बच्चे पालूंगी, किसी और के नहीं। Wow, Mom. The house looks marvelous. Where's Daddy? Good God. You look fabulous, Dad. I'm highly impressed. Thank you. It's promising. He's on time. Come, Sami. Come on in. Mummy, Daddy, I'd like you to meet Sami Khan. Hi. Sami, this is my mom and dad. Sammy, welcome. What lovely flowers. How sweet of you. Thank you. Thank you. Thank you. Perfectly all right. Please sit here. Sammy, will you have some roast? It's lovely. No, thank you. Actually, I'm a vegetarian. Well, will you have some vegetables? Well, sure. Could I have some? Yeah. Thank you. Would you like a drink? No, thank you. I'll just take water. The vegetables are really good for you. Very healthy. Enjoy. I would like some roast, please. I'll get you some. Thank you. It's really beautiful. Lovely. See, that's the trip to Tunisia.
Oh, yes. Are you out of your mind? I say no, and that is fine. Philip, for God's sake, don't behave like a 14th century father. Forget it. Calm down, Sophie. The parents, they always react like that. He's our guest. They always. At least talk to him. Forget it. Sir, I would like to ask you something. You may if you wish. Sir, I would like to have permission to marry your daughter. Listen, young man, don't waste your time or energy on this. It will not happen. It won't happen. Why? Because I won't allow it. I would love to have the reasons. Quite simply, Sophie and you are totally different. In religion, custom, culture, language, colour. Tell me one thing that Sophie and you have in common. There is one thing. There is. And that is that we love each other. Love. Love is like a flower. If you put it in another climate, it'll wilt. Can I ask you another question? Go ahead. Do you think your God is different from mine? Do you think that the feelings, emotions, sorrows, happiness, and love are different from mine? Do you think the color of your blood is different from mine? And if you think like that, you're sadly mistaken. You're wrong. It's not. Bye. साजिदा एहसान कह रहे हैं कि अब हमें भी कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? डॉक्टर ने कुछ कहा है? डॉक्टर के पास तो कल जाऊंगी। वैसे तो 10 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ। फिर क्या बात हुई? क्यों अडॉप्ट करना चाहती हो? असल में अकेली रहती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो इसलिए एहसान सोचते हैं कि सब बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो हम भी कर लें। वैसे तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ, मगर मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैं कैसे किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कहूँगी? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि कोई जॉब कर लो। बहल जाओगी। पहले भी तो करती ही थी ना। एहसान भाई का प्रोफेशन कुछ इस तरह का है कि वो बिजी रहते हैं, इसलिए तुम घबराती हो। कल मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ, दुआ करना। I know, Sophie. I know that. I know, but you don't believe me, do you? Did I say so? I do believe you. Look, Sami, this is my life, and I have the right to make my own decisions. I'm not going to let anyone else make them for me. I just won't let them. By doing this, you will hurt your parents. As you know, you are their only child. I don't want to hurt my parents. I truly and dearly love them. But I love you, and I have decided to marry you, no matter how different you are. Okay, promise me one thing. What? That you will never regret this decision ever. No, never. Sure. Of course. Great. Great. हेलो। हेलो अम्मा, अभी डॉक्टर के पास? जी। क्या कहा डॉक्टर ने?
वही पुरानी कहानी। सब ठीक है, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। औलाद 10 साल बाद भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ, आप देख लीजिएगा। You okay? ठीक हूँ। Good. अच्छा देखो, आज शाम मैं जरा जल्दी घर आऊँगा, चलेंगे बाहर कहीं। अच्छा, थैंक यू। हाफिज। I don't care if he's English or not. I care for him. He's really a nice person. He's got so many qualities. He's honest, he's caring, and he's a third gentleman. Isn't that everything that you would want for me? Stop this, Sophie. Please, Daddy, don't do this to me. Sophie, don't be so emotional. We know he's a nice boy, but he'll go back to his own country. Yes, he will go back to his country and I will go with him. Dearest, it's not easy to adjust in a different country with complete strangers and a totally different culture. Please, Mummy, don't make it more difficult for me than it already is. Don't you remember? My great-grandmother, she married an Asian and they lived happily right till the end. Don't argue, Sophie. Look, Daddy, I have decided to marry Sami and I'm sure I'll be really happy with him. With your blessings, of course. You will regret this, Sophie. No, I will not. Richard Dixon, why did this leave the government's transport policy? After all, this was a government that wanted to reduce car use. That's right. I think we're in a mess now because we've got climate change targets to meet. We've got obligations to reduce traffic, and yet we've already thrown away one of the tools that we can have a key thing, and one of the important ones that might have raised money, and that's one of the key things, of course. I think what we need now is leadership, and we don't need just to listen to what people say, but actually some leadership from the top to say, this is a bit of a mess, we need to do something really radical, let's get on with it. सुनिए, Thank you both very much. कहिए। Well, of course, today we've had मुझे एक बात कहना है आपसे। motorway tolls. Tomorrow we'll find out which direction the Scottish कहिए, Express क्या-क्या? is taking on new trunk roads. For the time being, back to the क्या कर रही हैं आप मैम? मैं देख रहा था। मैं बहुत ज़रूरी बात कहने जा रही हूँ। वो आप प्रोग्राम देखते हुए न सुन सकते हैं और न फैसला कर सकते हैं। खैरियत है? कहिए। वो याद है एक दिन आपने सजेस्ट किया था कि हमें कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा, लेकिन बहुत दिन पहले की बात है। हाँ, मगर मैंने सोच समझ कर फैसला किया है कि मैं किसी बच्चे को गोद ले लूं। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? नहीं, हाँ, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आप में अचानक की तब्दीली कैसे आ गई? आप तो इसके खिलाफ थी। अब खिलाफ नहीं हूँ। देखिए, हमने इस वक्त आप एक जज्बाती फैसला कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी और के बच्चे के साथ जुल्म हो जाए। मैंने इससे पहले ऐसा होते हुए देखा है। ये इतना आसान काम नहीं है। आप मुझसे ये तवक्को कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब इतना आसान काम नहीं होता जितना लोग समझते हैं। देखिए ना, किसी और के बच्चे को प्यार देना, उससे वो अपनाइयत का इजहार करना। माँ के दिल में तो अपने बच्चे के लिए कुदरती तौर पर एक प्यार जाग जाता है, लेकिन किसी और के बच्चे के लिए उस प्यार का, उन जज्बात का होना कुछ पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मैं मानती हूँ कि खून का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, लेकिन प्यार का रिश्ता उससे भी ज्यादा मजबूत होता है।
ठीक है, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लीजिए, कहीं किसी और बच्चे के साथ जुल्म ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ओके, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करें। तो कल ही चलते हैं, किसी इदारे में चलकर एप्लीकेशन देकर आते हैं। नहीं आमना, आई एम सॉरी, अगर हम बच्चे को अडॉप्ट करेंगे तो वो बच्चा पाकिस्तान से होगा, ताकि उसके और हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा फर्क ना हो। ये तो और भी अच्छा है। तो चलिए पाकिस्तान चलते हैं। मैं तो वैसे भी 4-5 साल से गई नहीं, आपकी अम्मी की डेथ पर भी नहीं जा सकी थी। हाँ, उस वक्त मैं बहुत जल्दी में गया था, कैसे लेकर जाता आपको साथ? बाद में मैंने कितना कहा था, कितने फ़ोन किए थे कि आ जाऊं, लेकिन आपने मना कर दिया। रिश्तेदारों ने तो मुझे ही बुरा कहा होगा। हाँ, ये देखिए उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अम्मी की बीमारी और मौत सब एक ही महीने में तो हो गया था, जाने का फ़ायदा क्या होता? और अभी आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मतलब वहाँ आपका तो कोई है नहीं ना। हाँ, आप मेरे साथ कहाँ मारी मारी फिरेंगे? मेरे ख्याल है आप उसकी यहाँ उसके लिए तैयारी कीजिए, उसको रिसीव करने की। क्यों नहीं करूँगी? तो कब जाएंगे? जब छुट्टी मिलेगी। आपको तो पता ही है छुट्टी मिलना इतना आसान काम नहीं है। लड़का या लड़की जो भी मिले बस ले लीजिएगा। यस, ओके। Goodbye, Mummy. Goodbye, Daddy. सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि अल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शी व ज़ीनत फर्शी मुहम्मद व आलि व अस्हाबी व अहले बैत अजमईन बिरहमतिक या
मैं मानती हूँ कि खून का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, लेकिन प्यार का रिश्ता उससे भी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लीजिए, कहीं किसी और बच्चे के साथ जुल्म ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। चलो, दुल्हन को हवेली तो अच्छी लगी। अरे भाभी, उसने इतनी बड़ी हवेली पहले कहाँ देखी होगी? समी ने बताया होगा कि मेरी इतनी जायदाद है, महल नुमा हवेली है, पीछे लग गई होगी। अरे रहने दे, मोहब्बत की शादी की होगी। अरे मोहब्बत गई भाड़ में। सफेद चमड़ी देखकर हमारे लड़कों की आंखें जमीन पर गिर ही पड़ती हैं, इसी तरह बावले हो जाते हैं। समी ने भी यही किया। समी ने वैसे बहुत बुरा किया, इतने बरसों की मंगनी को तोड़ डाला। अच्छा हुआ, बाद में ये गुल खिलते तो फिर पछतावा होता। जान दे देती हमारी लड़की, अभी भी उसकी आधी ही जान रह गई है। भाभी, आप भी तो उसे समझाए ना। आप तो बार बार इस किस्से का जिक्र लेकर उसके सामने बैठ जाती हैं। जाहिर है बेचारे को अफसोस तो होता ही होगा ना। तुम्हारी बेटी होती ना तो पूछती कि कैसी हंसती फिरती है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अब इस किस्से को ख़त्म कर दे, मत जिक्र किया करें उसके सामने। मैं कब उसके सामने जिक्र करती हूँ? इसीलिए तो मैंने उसको उसके मामू के घर भेज दिया है कि उस फरंगन की नज़र इस पर ना पड़े। अरे तुम नहीं जानती, बड़े जादू मंतर आते हैं इन लोगों को। कसूर तो सारा समी का ही है ना। वो समी आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आलिया कहाँ है? तुम्हारी बीवी को हवेली दिखाती फिर रही है। चलें ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वो आज रात हम लोग बाहर खाने पे जा रहे हैं और आलिया भी साथ जाएगी। अपनी मर्जी के मालिक हो, जो जी चाहे करो, मगर अपनी बीवी से कहना यहाँ रहना है तो अपने तौर तरीके बदले, ढंग के कपड़े पहनकर दावत में जाए। इस तरह के कपड़े पहनकर जाएगी तो खानदान का नाम उछलेगा। आप लोग मुझे सोफी से खफा लग रहे हैं, क्या अच्छी नहीं लगी आप लोगों को? लो, मैं कौन होती हूँ खफा होने वाली? हाँ, न 3 में न 13 में। मेरी लड़की को लड़कों की कमी है क्या? अच्छा होता अगर आप लोग उसको प्यार देते। वो अपना मुल्क, अपना घर छोड़ कर आइए यहाँ। तो हम कौन से खंजर चला रहे हैं? मुल्क छोड़कर आइए।